The board exam season is here. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I know a lot of you guys on my channel are from class 12, which means the board exam season is here. And if I'm not wrong, you have your English exam tomorrow. And in fact, a lot of you guys have also been requesting me for this video. So here I am, and in this video, I'll be sharing with you guys the last minute tips for your board exams, what you should do one day before your exam, and also what you should be doing in the prep break between two exams. And I won't take much of your time in this video, so without further ado, let's get started. So the first and most important tip is to revise key concepts. जो भी तुमने अपने notes बनाए हैं or the textbooks you are referring to, just make sure that you go through the topics which are important, which have been asked in the previous years and which you think will definitely come in this year's exam as well. तुम्हें जो भी सारे important concepts है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए and exams के 2-3 दिन पहले that's exactly what you're supposed to do. And यहीं पे दूसरी चीज है that make sure you are not starting any new concepts one day before the exam, क्योंकि तुम्हें जो याद था पहले वो भी भूल जाओगे और नया कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं आएगा. इफ इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक यू शुड स्किप इट, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो बहुत मुश्किल होगा इतना कुछ समझना. इससे अच्छा फोकस ऑन दी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड तुम्हारे मार्क्स बेटर आ जाएंगे. द नेक्स्ट टिप इज टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. आई नो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऑफ एग्जाम्स एंड यू वांट टू अनवाइंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स लाइक योर फोन, टीवी, सोशल मीडिया, Instagram, etc. You should be focusing your attention on your exams and your studies. अगर तुम Instagram पे random reels scroll करने वाले हो फिर तो कोई फायदा नहीं है. If you're actually watching videos like these which will help you in your board exam, तो अच्छा है, वरना कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने का जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स. सिर्फ आई थिंक 1 महीने की बात है, उसके बाद यू विल बी फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू. सो इस 1 महीने में या इन एग्जाम्स के दिनों में तो अच्छे से पढ़ाई कर लो. द नेक्स्ट टिप इज लिटरली द वन आई हैव सेड इन एवरी सिंगल वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू टू से इट. दैट इज टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड पास्ट ईयर पेपर्स. सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स एज यू कैन, बिकॉज सीबीएसई में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. द पेपर पैटर्न इज सिमिलर एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर साल. सो दैट्स व्हाई दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. इन केस यू स्टिल हैवंट गॉट योर हैंड्स ऑन एनी सैम्पल पेपर्स बुक, आई वुड लाइक टू शेयर दिस वन विद you guys. I have with me Oswal Gurukul's 36 sample question papers for CBSE class 12, which has been made specifically for the 2023 examination for you guys. This one right here is for commerce stream. Of course, it's available in all other streams as well, but commerce wali mein we have English, physical education, computer science, maths, accountancy, economics and business studies. So basically एक ही book में तुम्हारे सारे sample papers हैं. This book has been made strictly according to the class 12 syllabus. In fact, it has 46 sample question papers with 1 unsolved paper per subject. In all the solved papers, there are well explained expert answers for your better understanding, and it is completely according to the board's marking scheme. And it also focuses on the topics that are going to be asked in the board exam. So I would highly recommend you guys to check this book out in case you haven't already. अब तो तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट ही होने वाले हैं, so make sure तुम इस बुक को जल्दी से जल्दी ले लो. And of course, I'll leave the link in the description. You can also subscribe to Oswal's Telegram channel for free mock tests, study material and more, and I'll leave the link for that in the description as well. The next tip is to take breaks. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to avoid burnout. Every few hours, you should take a quick break, walk around the house, drink some water and start afresh. This way you will not get tired easily. And in fact तुम्हें पता ही है कि board exams लंबे चलने वाले हैं. It's not like 2 दिन में खत्म हो जाएंगे. So there's a lot of studying that needs to be done. And जैसे कहते हैं ना कि it's not a race, it's a marathon. अगर तुम बहुत ज्यादा stress लोगे, एक ही बार में बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे, then you'll really get bored of it and तुम आगे के exams के लिए नहीं कर पाओगे. And you obviously have to study for every exam. So make
sure you're not burning out. The next tip is time management. Again, as I said, there is so much that you need to do. इतने सारे topics cover करने हैं, chapters cover करने हैं for every subject, and there's a lot of studying that needs to be done. So make sure कि तुम अपना time अच्छे से divide कर रहे हो for everything that you need to study. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक चीज पे इतना ज्यादा time लगाया कि बाद में बाकी चीजें करने के लिए तो time ही नहीं बच रहा है. So make sure you have divided your time well, you're managing your time well, and तुम time waste नहीं कर रहे हो. Next up, stay hydrated and well rested. It's extremely important that you get enough sleep one day before the exam, and not just one day, the entire time you're giving board exams. And you're drinking plenty of water because that will help you to concentrate more, remember better, and of course फिर तुम्हारे exams तो अच्छे ही जाएंगे. हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमने पूरी रात पढ़ाई की, अगले दिन सुबह बोर्ड एग्जाम के टाइम पे नींद आ रही है. We cannot afford that at all. इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, रात को टाइम से सो, सुबह टाइम से उठो and go give your board exam. And last but not the least, this is extremely important, that is to stay positive. Your mindset is going to make or break your board exam result, and I am not even joking. अगर तुम पहले से स्ट्रेस में रहोगे और सोचोगे कि मेरे से तो नहीं होने वाला है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर तो समझ लो नहीं आने वाले हैं मार्क्स. I'm pretty sure that if you are not going to stay stressed, you're going to have a positive mindset and you're going to put in the maximum effort you can for your exams, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा and उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. This is the time to just study and that's it. और कुछ नहीं सोचना है, बस कुछ हफ्तों की बात है, then you will be done with these exams. So don't worry in case you are still feeling stressed. अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, take a chill pill, take a breather, सब सही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. And of course, I'm always here to help you guys out. Whatever your queries are, leave them in the comments. I'll be happy to answer all of them. And with that, I'm going to end this video here. All the very best, guys. I know you've got this. And फोड़ के आ जाना एग्जाम में, मुझे पता है तुम सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है. So yeah, if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope this video will help you guys. And if it did, then don't forget to hit the like button. Also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram. And until next time, bye.